So there we go. T-test, you know already we do for small samples. Okay. Yes. So use the T-test. Acha, and like the main condition is if you don't know the variance, if the population variance is unknown, and either of the following is nothing but sample size अगर 30 से ज़्यादा है, Mm-hmm. and that is like it is अगर आपको पता चलता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रहा है, then you can use it. Sample is small, less than 30, but the distribution of the population is normal or approximately normal. Yeah. Hello. This is, yeah. Second point is known. Yeah, sample size अगर greater than equal to 30 है Hmm. and population variance unknown है, तो you can use t test. Yeah. Okay. अच्छा, z test का क्या कर सकते हैं? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर द लाइक पॉपुलेशन मीन when population is normally distributed with known variance, अगर known variance है तो z Mhm. test. अगर unknown variance है, sample size greater than equal to 30 है, t test. और अगर लेस देन 30 है लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, तो भी टी टेस्ट. लेस देन 30 व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज Approximately normal. नियर नॉर्मल. ओके, दैट्स इट. तो आपका टी टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है x माइनस म्यू नॉट बाई एस बाई रूट एन. ओके, एंड इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना है आपको. Z Yeah. test is x minus mu by standard deviation by root n. Okay, ये standard deviation is standard deviation of the population, Population. hypothesized value, observed value, sample mean. यहाँ पर वैसे स्मॉल सैंपल्स ही हम लोग ज़्यादातर उस टाइम पे टी टेस्ट करते हैं. सैंपल मीन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू एस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल, उधर पॉपुलेशन है, एन इज द सैंपल साइज. Yeah. Critical Z value is already, you know, when like it is 90% confidence level and 10% significance level. Two tail test 1.65, two tail test for 95, 1.96 for 99, 2.58 critical values. Okay, so Yeah. this is for one tailed के लिए, this one tailed के लिए for 5% it is 1.65 plus right side. Okay, for two 1.6. tail Yeah. either be 1.96, either be 1.96. Got my point. Yes. Yes. सो टू टेल टेस्ट के वैल्यूज ये हैं. ओके, Yeah. एंड वन टेल के ये हैं. सो ये क्वेश्चन करो सर, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो. ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं. विल यू ट्राई दिस? Yeah. Yeah. I'll try. या प्लीज ट्राई दिस. आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. Okay. Okay. Portfolio don't reply like that. तो यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है Yeah. Population एंड variance is 250 unknown. ऑब्जर्वेशन टी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट. Yeah. With 250 observations. लेकिन पॉपुलेशन लार्ज है, z डिस्ट्रीब्यूशन वुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल. This is Yes. a trick question. Either distribution T or Z is appropriate with regard to difference in likelihood of rejecting a true null. Since our sample is so large, critical Uh-huh. values for T and Z are almost identical. Hence, there is almost no difference in likelihood of rejecting a true null. Okay. मतलब दोनों भी ले सकते हैं आप, सैंपल बहुत बड़ा है तो. ओके, Okay. When your company's ECMO machine is working properly, the bead length of ZigMo is 2.5. From time to time, the machine gives too short. When this happens, the machine stops and the machine check the machine account equal to the parameter. Each day, today is no. Practice of the quarter is short of median 2.5.
Okay. The population standard deviation is known to be okay. Population deviation. This is known deviation, known हाँ, variance. हेलो Yeah, population standard deviation दिया है next example पे. सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा. Hello, is this audible? हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा. Yeah, hi. Jay, this is audible. या ओके, बहुत बहुत कम आ रहा है सर वॉइस. कम आ रहा है क्या? No? हाँ, यस. Okay. Okay, next one is saying that population standard deviation is known. They are machines का length के बारे में बोल रहे हैं. The mean length of gizmos is this, and quality control take a sample is there today. Random sample इतने gizmos का लिए mean इतना है. Population standard deviation Mean, is yeah. known. 5% significance level. Determine the machine should be shut down and adjusted. तो इसमें हमको क्या करना है, पहले hypothesis बनाने का है. Yeah, Okay. H not an H alternative. You when your company gizmo machine is working properly, mean length is this. तो आप क्या बोल रहे हो कि मीन कितना है, मीन लेंथ? 2.5 inches. एक सेकंड, ऐसा नहीं आ Starting रहा. mean length. However, no, when your company gizmo machine is working properly, the mean length of gizmos is this. However, from time to time machine gets out of alignment and produces gizmos that are either too long or too short. When this happens, production is stopped and the machine is adjusted. To check the machine, quality control department takes a gizmo sample each day. तो ये सैंपल के बेसिस पे आप क्या बोल रहे हैं, 49 गिज्मोस का 2.49 आ रहा, करेक्ट? हाँ. तो आपके हिसाब से नॉट इक्वल टू 2.5 है, करेक्ट? Yeah. बट नल के हिसाब से 2.5 correct है. क्योंकि आपका डिपार्टमेंट सैंपल लेके रिसर्च करा. हाँ. Yes. दे केम टू नो इट इज 2.49, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. Yes. When you collect a sample, do a research, then you get the answer. 49. So Yeah. these are the hypothesis. So two-tailed test है. You say not equal to, null says equal to, so you can Yeah. go with the Equal Z to. ना, क्योंकि Yes. कितने Yes. सैंपल्स लिए आप, मोर देन 30 ले लिए. Yeah. More than 30. Z. स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम है आपको, उससे आप वेरिएंस निकाल सकते हैं. सो Yes. नल, सो यू कैन गो विद जेड टेस्ट, जेड स्टैटिस्टिक 5% के ऊपर, एंड आपका -3.33 आ रहा. Yeah. सो आपका टू टेल टेस्ट है. सो ईदर और, ओके, ईदर लाइक आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू और लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, Less करेक्ट than ना? the critical value. Yeah. Test statistic. लेस देन क्रिटिकल वैल्यू. सो क्रिटिकल वैल्यू आपका क्या है, -1.96, क्योंकि टू टेल्ड है, एंड -3.33 इज लेस, सो यू रिजेक्ट दी. Okay. Yeah. 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 You reject the null hypothesis, correct or wrong? Yes. Yes. 3.3 आया ना. Right. We will That's reject. Test statistic is less than that. हो गया सर ये क्वेश्चन तो. Yeah. Next is one tail test भी है इसमें. So Okay. what is the next justice? नीचे one tail test भी है. I'm just seeing that. एक पेज में बस मिसिंग है. नीचे like continuation of that one there is one tail test also. एक सेकंड सर, आगे का पूरा पेजेस है. ठीक है, मैं वो पेज एक डाउनलोड कर रहा हूँ. Okay.
सर एक सेकेंड जरा, मैं एक बार रीड करिए, मैं एक बार 2 मिनट्स का. Okay. Hello. Yeah. So identify the appropriate test statistic and interpret the results for a hypothesis test concerning the quality of population means of two at least approximately normally distributed populations based on independent random samples with equal and unequal assumed variances. So up to this point we have been concerned with test of single population mean. एक ही मीन देता, अपन उसको लेके वेदर नल को रिजेक्ट करना कि नहीं करना, वी यूज्ड टू सी. ओके, हेलो. Yeah. Now we have moved forward. So in practice we frequently want to know if there is a difference between the means of the two population. मतलब जो एक मीन दो मतलब नल बोलता कि मीन like mean 1 equal to mean 2 बोलता, क्या बोलता? Mean 1 equal to mean 2. हेलो. Yeah, mean 1 equal to mean 2. Yeah, he has two observations. There are two observations. There are two means. He says both the means are equal. We have to tell that these are not equal. Okay. Got it? Okay. And to prove him wrong, we have to do the hypothesis testing. So that's what. यही और कुछ नहीं है. So there are two tests that used to test difference between the means of two population. Application of either these tests requires that we are reasonably certain that our samples are independent and they are taken from two populations that are normally distributed. Both of these t tests can be used when population variance is unknown. लेकिन अगर आपको population variance नहीं मालूम है तो you have to take t test. Okay. So Okay. in one case the population variance are assumed to be equal and the sample observations are pooled. In other case, no assumption is made regarding the equality between the population variances and the t-test uses an approximate value for degrees of freedom. मतलब एक में आपको variance like population variance में भी equal है नहीं है वो भी देखना है आपको, ठीक है. So better हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा. A pooled variance is used when t-test for testing the hypothesis that the means of two normally distributed populations are equal. मतलब दो means equal है. So when the variances of populations are unknown but assumed to be equal, मतलब आपको variance पता नहीं है लेकिन दोनों का variance equal है बोल के आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? Both are equal. Variance of Variances. first observation is equal to variance of second observation. So
उसके लिए सबसे बेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? टी स्टैटिस्टिक. Okay. Okay, so there are two means, and variance of first sample, variance of second sample divided by n. Variance is nothing but it's a average. Okay, it's a average. मीन स्क्वायर्ड डिविएशन का जो मीन स्क्वायर्ड डिविएशन मतलब आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका स्क्वायर ही तो वेरिएंस है ना. सो डिविएशन का जो भी एवरेज होता है वही आपका वेरिएंस है. करेक्ट और रॉन्ग? द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर सी एक्स माइनस एक्स बार बाई एन द होल स्क्वायर, ये वेरिएंस है कि नहीं है? Yes. हेलो. Yes. Yes, Jen. इट इज द इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस. दैट्स इट. एंड Okay. यहाँ पर आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2 अगर आपके पास दो सैंपल्स है. लेट्स सी अ सिचुएशन. अच्छा, ये जो हम लोग अभी कर रहे थे एंड S1 का फॉर्मूला आपका n1 माइनस वन इंटू S1 स्क्वायर देन n2 माइनस वन इंटू h2 स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी वेरिएंस ऑफ द वेरिएंस ऑफ बोथ द सैंपल्स. पूल्ड वेरिएंस क्या बोलते थे उसको अपन? अच्छा, pool variance. Pooled variance. Okay, this is the pooled variance. Okay, यहाँ पर आपका एस स्क्वायर पी दिया हुआ देखो, पूल्ड वेरिएंस बाय द ऑब्जर्वेशंस. सो इसमें हम लोग क्या देखे थे? वेरिएंस इज अननोन, ये वाला फॉर्मूला. नेक्स्ट केस, द टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2 when populations are normally distributed and variances that are unknown and assumed to be unequal. Variances are unknown and assumed to be unequal. इससे पहले क्या था? Variances are unknown but assumed to be, But them equal. हाँ, जब assumed to be equal है तो ये फॉर्मूला, जब assumed to be unequal है, unknown variance and unequal है वो तो ये फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम लोग जब वेरिएंस दोनों का जो वेरिएंस है आपको अननोन है और अनइक्वल है तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल वेरिएंसेस ले लेंगे. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. S1 square by N1 plus S2 square by N2. Can you take this or not? In denominator. Yeah. क्या फर्क है सर इसमें उसमें? When the variances are equal, you take a pooled variance. Okay. Combined. Yeah, when the variances are not equal, you take individually. उतना ही. And this is the formula for degrees of freedom. बस कुछ भी नहीं है, आपको सिचुएशन देखना है और ये लगाने का है फॉर्मूला, उतना ही चाहिए. ये रीड करिए सर क्वेश्चन एंड विल डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ. यहाँ से मेरा खत्म हो गया शायद पूरा. अच्छा, ये रीड करिए, देखेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक सेकेंड. Normal. अच्छा, ओके, गॉट. अच्छा, ये वाला ये ना, दिस इज देयर आई थिंक.
ओके ओके. So read this question, sir. Yeah, yeah. I'm reading it. इक्वल बोल रहे, पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल हियर. हाँ, मतलब आपका सेकंड. Sue Smith is Sue Smith is investigating whether the abnormal returns for acquiring firms during merger announcement periods differ for horizontal and vertical mergers. She estimates the abnormal returns for a sample of acquiring firms associated. एक second. Yeah. तो इसमें क्या हो रहा है? Sue Smith is investigating whether the abnormal returns, यानी आपको रिटर्न्स आएगा. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मीन्स है और इक्वल वेरिएंसेस का एग्जांपल दे रहा है. इक्वल वेरिएंस मतलब पूल्ड वेरिएंस आएगा आपको. ओके, या एसपी करना पड़ेगा. एसपी. अच्छा, हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब सेम इंडस्ट्री, यानी होंडा इज मर्जिंग विद सुजुकी, दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर. वर्टिकल मर्जर मींस होंडा इज मर्जिंग विद aircraft manufacturing, Honda with Boeing, vertical merger. She estimates the normal returns for a sample of acquiring firms associated with horizontal merger and sample of with vertical. मतलब ये देख रही है कि रिटर्न्स आता कि नहीं आता. Sue Smith is investigating. Suppose you become a manager in a company, you get these roles कि रिटर्न्स आपको किससे आएगा. आप मर्ज हो रहे हो, ओके, और वर्टिकल मर्जर भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, दोनों भी. रिटर्न्स किस में ज्यादा है देख रही है. तो मीन एवरेज रिटर्न फॉर हॉरिजॉन्टल मर्जर इज दिस एंड वर्टिकल इज दिस, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है. या सम abnormality. या सैंपल, आई थिंक सैंपल मीन ना, या सैंपल साइज 6481. ये क्या, यही है क्या क्वेश्चन में? हाँ यही है. नो हेलो. 64. या हाँ सर, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? डिफरेंस बिटवीन द मीन्स देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? ओके. हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड वर्टिकल मर्जर. ठीक है. So Smith assumes that the samples are independent, the population means are normally distributed, and the population variances are equal. Smith calculates the t statistic as this and the degrees of freedom as 143. Should Smith reject or fail to reject the null hypothesis that the abnormal returns to acquiring firm in the announcement period are same for horizontal and vertical merger? तो क्या बोल रहा सर वो? degree of freedom. Abnormal returns to acquiring firms during announcement are same. सेम मतलब क्या? इक्वल. हाँ, मतलब उनके बीच में डिफरेंस क्या है? ओके. 0. नो 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 नो. स्मिथ बोल रहा ना सर. हाँ, alternate. या So should like Smith failed to reject the null hypothesis. null मतलब m1 minus m2 is equal to 0 का मतलब क्या है? m1 is equal to m2. Equal means, ओके है ना? ओके.
m1 माइनस m2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब आप 1 या 2 कुछ बोल रहे, तो m1 इज इक्वल टू 1 प्लस m2। ओके, सो स्मिथ कैलकुलेट करता है, सब होता है। स्मिथ शुड स्मिथ फेल रिजेक्ट or fail to reject the null hypothesis that the abnormal returns to acquiring firms during the announcement period are the same for horizontal and vertical mergers। तो मीन किस में सेम है सर? Okay. That means the difference between the means is, 0. Since they and are you are equal. saying it is not equal. That means not equal to 0. Correct or wrong? Okay, but Smith is assuming that both are equally No, opposite. here they are clearly saying, should Smith reject or fail to Fail reject to null reject. hypothesis that the abnormal returns to acquiring firms during the announcement period are same for horizontal and like vertical mergers? Okay. 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 Fine, fine, fine. Abnormal return same है बोल रहा। Okay, okay. Fine, fine, fine. हाँ, so So, like Smith will be alternative, right? So mu1 equal not equal to mu2, right? yeah, we will say that he says equal. Okay, Okay. that is there is no difference. They are equal ना? When there is equality, the difference is 0. Yes. We are saying not equal. Okay, Okay. अब ये t अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना, 120 कहाँ दिया वो? 120 दिया ना? हाँ, degrees of freedom 120. हाँ 143 है ना? 1.65 already has given, right? So एक सेकंड सर, 5% significance level, critical t value for 5% level, and closest degree of freedom specified in t table, and you should verify that the partial t table contained in the following figure। यहाँ पर हमारे सामने दिया the closest entry for degree of freedom is मतलब ये नहीं है हमारे पास, 143 नहीं है, तो हाँ, 120 को क्लोजेस्ट ले लिया। करेक्ट? okay. इक्वल नॉट इक्वल मतलब दिस इज टू टेल टेस्ट। Okay. तो हम लोग जो अपना पी है वो 0.025 के हिसाब से देखेंगे, कितना आ रहा? 1.980। करेक्ट? 1.980, right? अब आपका टी स्टैटिस्टिक आप फाइंड कर लो। Already he has calculated T statistic as minus 5.74, right? हाँ, वो Okay. ऑलरेडी दिए सो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। Okay. तो माइनस ये टू टेल्ड है ना, तो प्लस और माइनस में देखना, तो दैट इज लेस देन माइनस 1.980, सो यू कैन रिजेक्ट द Yeah. नल हाइपोथेसिस। Yeah, given thing is less than minus 1.9. या, Oh, I meant to वी say. रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट। Jayant, this is same like that test test statistic less greater than this thing. ये नहीं रहता सर, खाली वैल्यू इसका टेबल अलग रहता बस। Okay, so what we got is 5.78, right? He That is assumed. already given in the question already. We need to Yeah, just see critical value. yeah, critically minus 1.8. So minus 1.9 is greater than minus 5 point something. Fine, fine. So here हमको टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू कौन सा है, क्रिटिकल वैल्यू आई मीन टू से? Just a second, sir. या क्या बोले? यार टेस्ट स्टैटिस्टिक हमको सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, I'm finding very difficult to hear. व्हाई लाइक दैट आई एम नॉट अभी हाँ नाउ हाँ, या सर पता नहीं सर, मेरे मतलब स्टूडेंट्स का वॉइस आता नहीं है। आप ईयरफोन यूज करते तो नहीं आता शायद। मे बी आई एम यूजिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर हैविंग ट्रबल, राइट? मेरा वॉइस बराबर आता हमेशा। या आपका भी समटाइम्स नॉट नॉट बट नॉट आज तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं आज लैपटॉप को कनेक्ट किया था आज। अच्छा, कुछ हाँ, क्या फैन व्हाट इज साउंड द क्वेरी?
फैन साउंड आ रही है क्या ज्यादा? बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा सर मेरे को। अभी? नाउ? हाँ समवॉट, या आई कैन, मतलब आई हैव टू मैनेज, दैट्स इट। Okay, just hold on for 1 minute. I'll change my earphones. Just 1 minute. या Jayant? Hello? Yeah, Jayant? हेलो हेलो। हेलो Jayant? Hello? हेलो। Yeah, Jayant. Is this या audible? Is this audible now? या इट्स ऑडिबल, अब बोलिए सर क्या है? हाँ, मैं यही like this test statistics should be greater than critical value, ना? सर ग्रेटर और लेस। Yeah. See, So greater is nothing but critical value is 1.96 for example, and your test statistics 5 point something. This yeah, is greater fine. than this. 5.74 is greater than 1.96. Yes. Second case 1.96 should be greater than minus 1.96 should be greater than minus 5.74. Then also you can reject. It is Okay, or, okay, not fine. and. Either Okay, this or that condition should satisfy. okay, So we rejected, okay? okay. अब ये कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ये पूरा ऑलमोस्ट एक ही है सर, कुछ भी नहीं है, खाली बस ओनली द थिंग इज व्हाट चेंजेस द अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस, वो अंडरस्टैंड हो गया बोलते हो, द प्रोसेस इज सेम। नाउ Okay. नेक्स्ट, identify the appropriate test statistic and interpret the results for a hypothesis test concerning the mean difference of two normally distributed population। mean difference यानी मीन में डिफरेंसेस है आपका। Okay. अभी क्या था, इक्वल मीन था, करेक्ट? Yeah, equal means the. अभी मीन इक्वल नहीं रहेगा। Okay. So, while the tests considered in the previous section were of the difference between the means of two independent samples, दो सैंपल थे, सैंपल वन सैंपल टू, उन दोनों का मीन था, उनके बीच में कुछ डिफरेंस था। नल बोलता Okay. नहीं है, हम बोलते हैं। Okay. ओके, so now Yeah. concerning the mean difference, let's see what they say. Sometimes our samples may be dependent। अभी हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल्स करें, अब सपोज डिपेंडेंट सैंपल है, यानी ये सैंपल कुछ ना कुछ एक कनेक्शन रखता है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन। ओके, Okay. so if the observations in two samples both depend on some other factor, we can construct a paired comparison। What is that? Paired comparison. So test of whether the means of differences between observations of two samples are different. Dependence may result from an event that affects both set of observations। दोनों में अगर डिफरेंट भी रहा, लेकिन कुछ तो कुछ डिपेंडेंसी रहती है। ओके, Yeah. सो डिपेंडेंस में रिजल्ट फ्रॉम एन इवेंट, कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जहां पर, अब जैसे क्या होता है कि ये एक ब्रदर है, ये एक ब्रदर है, दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, बट दे आर कनेक्टेड विद वन सिंगल पेरेंट, करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. अगर ये अपना लाइफ में इंडिविजुअल जी रहा है, ये अपना लाइफ में इंडिविजुअल जी रहा है, ये भी अपना एक हाउस बना लिया, ये भी हाउस बना लिया, ये भी पैसे कमा रहा, ये भी पैसे कमा रहा, ये भी गाड़ी ले रहा, ये भी गाड़ी ले रहा, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते, बट जब पेरेंट को कुछ हुआ तो दोनों को भी जाके देखना पड़ता उसको, करेक्ट? Hmm. हेलो, Yeah. गॉट इट सर? Yes. ये थोड़ा फिल्मी स्टोरी हो गया था, बट राइट वे टू अंडरस्टैंड। Yes. सो
Dependence may result from an event that affects both sets of observations for a number of companies, or because observations of two firms over time are both influenced by market returns or economic conditions. यानी दोनों डिफरेंट कंपनीज है, बट मार्केट में अगर कुछ अगर इन्फ्लेशन रिसेशन आएगा तो बोथ विल बी इंपैक्टेड. Okay. For an example, a paired comparison test consider a test of whether the market returns on two steel firms are equal over a 5-year period. दो स्टील फर्म्स है, स्टील S1 एंड S2, ये दोनों भी रिटर्न्स कमा रहे हैं. Okay. Whether are they equal for a period of 5 year or not. So we can't use the difference in means because we have a reason to believe that the samples are not independent. To some extent, both will depend on the returns on the overall market, risk and the conditions in the steel industry, correct? Yeah. They are independent firms, but they are dependent on what? Okay. Steel industry performance. Yeah. Performance. अगर of- मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो दोनों भी फर्म्स विल गेट इंपैक्टेड, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. So scenario wise we are checking. We have to take a decision, na? Mm-hmm. That is the industry specific risk, which both of them depend on that. In this case, our pairs will be the returns on each firm over the same time periods. Okay, the pair will be ISCA return and ISCA return. So we use the differences in monthly returns for the two companies. क्या differences दोनों के बीच में है? Difference नहीं है बहुत टाइम के लिए तो अच्छा है. Difference है मतलब because of the demand like fluctuations in the steel industry. So the paired comparison test is just a test to whether the average difference between monthly returns is significantly different from zero based on the standard error of the differences in monthly returns. तो ये सब की जगह पे हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अब देखना है इसको क्या होता है. Remember, the paired comparison test also requires that the sample data be normally distributed, of course. Although we frequently just want to test the hypothesis that the mean of the differences in the pairs is zero, the general form of the test for any hypothesized mean difference MDZ is as follows. So null क्या बोलता, दोनों का मीन यानी इसका जो मीन है MD कुछ भी ना बता रहा, मीन डिफरेंस बता रहा. mean of the population of paired differences. मतलब एग्जांपल देखते हैं. सपोज Joe Andrews is examining changes in estimated betas for common stock of the companies. Okay, ये क्या कर रहा है, चेंजेस देख रहा है बीटास के ऊपर. बीटा इज नथिंग बट द रिस्क फैक्टर in telecommunication industry before and after regulation. Andrew believes that the betas may decline because of the deregulation, since companies are no longer subject to uncertainties of rate regulation, or that they may increase because there is more uncertainty regarding competition in the industry. तो बीटास क्या हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है डीरेगुलेशन की वजह से, और इंक्रीज भी हो सकता है. The sample information is gathered is reported in the following figure. Determine whether there is change in betas. Now, mean of differences in betas दिया हुआ है. Sample standard deviation of differences, sample size. Mean of differences in betas मतलब mean of differences. Okay, betas का mean. दो betas के बीच का difference. एवरेज डिफरेंस. ओके, ऑन एन एवरेज दोनों के बीच में, दोनों बीटा के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है. ओके, तो हमको क्या बताना है, स्टेट द हाइपोथेसिस. देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द मीन डिफरेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो द टू टेल टेस्ट इज इन ऑर्डर हियर. दस द हाइपोथेसिस आर स्ट्रक्चर्ड एज. नल क्या बोलता, मीन डिफरेंसेस आपको कितना है सर? 20.23. हाँ, क्योंकि एंड्रू एग्जामिन कर रहा ना चेंजेस इन बीटास, वो रिसर्च कर रहा है. एंड एंड्रू बिलीव्स दैट द बीटास में डिक्लाइन
बिकॉज ऑफ द डीरेगुलेशन सिंस कंपनीज आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द रेट। ये सब हो गया। द सैंपल इंफॉर्मेशन ही गैदर्ड, कौन निकाला सैंपल इंफॉर्मेशन? या एंड्रस। तो उसका सैंपल इंफॉर्मेशन क्या बता रहा? 0.23 है मीन ऑफ डिफरेंसेस, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट और रॉन्ग? या तो null will say that is the difference is equal to 0. that means he says there is no mean difference, Okay. and we are saying the mean difference in betas is the average difference in betas is 0.23. that's what, बस इसके बीच में हमारे को करना है। so अब हम जाके रिलेट करेंगे the mean of the population of pair differences, यानी एक जना क्या बोलता, ये दोनों में ये नॉट इक्वल टू, यहां पर क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू क्या बोल रहा है, 0, करेक्ट और रॉन्ग? हाँ। वो बोल रहा है इक्वल टू 0। या मीन तो डिफरेंस। ये बोलेगा कभी भी इक्वल है बोल के बोलेगा, हमको क्या बोलना पड़ेगा, इक्वल नहीं है बोल के बोलना पड़ेगा, मीन डिफरेंस। ओके, सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, मीन डिफरेंस नॉट इक्वल, एंड नल क्या बोलेगा, मीन डिफरेंस इज इक्वल। ओके ओके। मैं सर, हाँ मीन ऑफ क्योंकि द आपके पास पॉपुलेशन। दो पेयर्स हैं, दोनों के बीच में, अब यहाँ पर देखिए, although we frequently just want to test the hypothesis that the mean of differences, the average of differences, difference 1 difference 2 ऐसा 5 differences निकाले, उसका एक एवरेज आया इन द पेयर्स इज 0, कौन बोलता है वो 0 है बोल के? ये हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस। हाँ, और हम लोग क्या बोला, नॉट इक्वल है बोला, नॉट इक्वल टू 0. एवरेज ऑफ डिफरेंसेस। सो फॉर पेड कंपैरिजंस, अच्छा अब इसमें वन टेल भी हो सकता, हम बोलते ग्रेटर देन मीन डिफरेंस ग्रेटर देन समथिंग है, नल बोलता लेस देन इक्वल टू है, ठीक है? ओके। अच्छा नल बोलता लाइक हम ग्रेटर बोलते, उन्होंने लेस देन इक्वल टू बोलता, हम लेस देन बोलते, वो ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता। ओके। कंपैरिजन टेस्ट द टी स्टैटिस्टिक विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज, ये आपका फॉर्मूला है डी, सैंपल मीन डिफरेंस, यानी आपका जो जो भी सैंपल आप लिए उसका डिफरेंसेस का एवरेज निकालो। सर क्या करते हैं, डिफरेंसेस का एवरेज। अभी देखे ना हम लोग। सो यहाँ पर ये आ गया, ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हियर वी आर, ये बीटा का हेलो, या बीटा टेबल ये सब नहीं दिया है मेरे को। हाँ सर, बीटा टेबल। ओके। बीटा टेबल, सैंपल साइज 39 एंड ये मीन डिफरेंस 0.23 है ना, 0.23। सर वो बीटा बीटा नहीं देता, वो डिफरेंस देता, बस अपने को सीधा सीधा हाइपोथेसिस करने का होता है। हाँ ये क्वेश्चन पे ये बीटा से क्या करने का है अपने को, मीन डिफरेंस से मतलब है। या that's fine I'm just saying that the table is not given, only sample size 39 मेरे को दिया है बस ये इसमें। तो सैंपल साइज हमारा 39 है, आगे आगे डेटा है, आगे देखते हैं सर। इज इक्वल टू डी डैश बाई एस डी डैश, अच्छा ये आपको 0 है ना सर, इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, वो डिफरेंस इन मीन क्या है, 0। वो किसका है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, करेक्ट? या तो स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के ऊपर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 39 माइनस 138, using the t distribution two-tailed critical values at 5%, degrees of freedom 38, 38 is, ये आप देखिए टू टेल्ड है क्योंकि इक्वल टू नॉट इक्वल टू चल रहा है, तो 2.024, ठीक है? which is already, और आपका हमारा t test already they have given टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10.26। 10.26 है ना, इधर पर कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ दिया है 10?
या थोड़ा क्वेश्चन पे थोड़ा डिफरेंस है इधर. एंड्रयूज कैलकुलेट्स a t statistic of 10.26 for this hypothesis test. अच्छा 10.26 है क्या यहाँ पर? या मेरे बुक 10.26 में है is ही all. नहीं, वही Yeah, मैं भी परेशान होके ढूंढ रहा हूँ. so for that one then he is saying that अच्छा 2.0. अच्छा, हाँ हाँ, he calculated here. He took the difference and divided by the standard deviation, the standard error. एक मिनट. He mean of the differences is nothing but t ना. हाँ. ये d ले लिया उन्होंने mean of differences. 5.14. ओके ओके. डायरेक्टली मीन ऑफ डिफरेंसेस डायरेक्टली ले लिया उन्होंने, वो अपने को कैसे भी वो जीरो ही चाहिए, वो तो मालूम है. तो ओके 10.2596 आया. उधर पर क्या आ रहा अपने को 2.204. ये 10.2596 is more than 2.024 ना. So we या. reject null hypothesis. यस यस यस. That's it. सर आज को तो बस है इधर ही है, मेरे को अब जाना है. ओके. टुमारो वी कैन कंप्लीट आई थिंक. सर कल टाइम देख के मैं बोलता हूँ सर, कल हो तो कल एक आधा एक घंटा बैठ के फिनिश कर लेंगे, ठीक है सर? हाँ फिनिश कर देंगे, कल फिनिश कर देंगे. ओके एंड जैन. हाँ. या इन कैन यू सेंड मी दोस एफआरएम प्रॉब्लम सॉल्विंग कल भेजते बोले थे ना. किसका कौन सा चैप्टर? हाइपोथेसिस. सर वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो वीडियोस में लास्ट के नहीं लिया, डाउनलोड नहीं कर लिया. क्वेश्चंस भेज दो. क्वेश्चंस तो यही है. मैं देखता हूँ सर, मेरे पास बायोनिक टर्टल वगैरह का किसका है तो आई सेंड यू. कुछ ना कुछ बेस्ड ऑन दिस हेलो, टॉपिक. या आई विल कुछ सेंड ना. यू द हाइपोथेसिस चैप्टर पीडीएफ टू यू सर फ्रॉम बायोनिक टर्टल. ओके, या वीडियोस आप करवाए थे ना फॉर पीडीएफ अदर पीपल. पीडीएफ आई सेंड यू. ओके. नो आई थॉट ऑफ हैविंग सम वीडियोस ऑफ दिस क्वेश्चंस सर मुझे व्हिच यू. आप मेरे को फोन करिए सर, मेरे को वॉइस नहीं आ रहा, आई एम सॉरी. ठीक है ठीक है ठीक. हाँ सर, ओके सर, ओके सर, ओके.